Today we will study The History of the Tulip by Wilfred Blunt. This essay shows the story of world's most coveted flower and the extraordinary passion it aroused in people. This essay basically follows the 1630s Dutch mania for tulip flower varieties, which became natural obsession for a very short period of time. This essay has been divided into two sections which reflect the boom and bust of this flower. I have made these outlines from each paragraph of these sections for ease and better understandings of the students. Para number 1. So, no classical author mentioned tulip or a flower which could be identified with any probability with tulip, though one variety grows wild in Italy and several kinds are common in Greece. So now this is quite simple and quite easy to understand that no classical authors ever mentioned tulip or any flower which could be identified with tulip in their art. The second point is no Western painting, pottery or textile earlier than end of 16th century shows tulip, and the well-known Roman mosaic, which includes garden tulip, is now agreed to be an 18th century reconstruction. Like the classical authors, no Western artist showed tulip in their art, and the well-known Roman mosaic in where we can see tulips, some of the garden tulips are now is now generally agreed the reconstruction, 18th century reconstruction of the flower. Paragraph number 2. Busbeck, ambassador from the Emperor Ferdinand I in year 1554, visited Suleiman the Magnificent. Suleiman the Magnificent is the Badshah of Turkey. Observed flowers everywhere, narcissus, hyacinth and tulipum in midwinter, a season unfriendly to flowers. Greece, it was a part of the Turkish Empire, abounds in narcissus, hyacinths, famous for their fragrance, and tulipum, admired for the beauty and variety of their colors. As a point number 1 shows us that Busbeck observed these flowers in winter, a season unfriendly to flowers. So the point number 3 explains this. Turks pay great attention in cultivation of these flowers. Busbeck received many presents of these flowers, which cost him not a little. Section A outlines paragraph number 3. In 1561, this flower, tulip flower, was introduced into Germany. Rich German bankers were growing tulip in Asperg and in Antwerp. Merchants received cargo of tulip bulbs from Constantinople. This point is showing that the trade from Constantinople to Europe has been started. From Flanders, the tulip was introduced into its spiritual home, Holland, and about the year 1578 it reached England. Section A, para 4 outlines. Tulip reached late in France, where religious wars going on and no records of tulip bulbs were found until 1608. But soon after this, almost every woman was seen with a bunch of rare blooms tucked into her low-cut dress, and after a few years, bulbs were changing hands for fantastic sums. Low-cut dress means
every fashionable, trendy woman was seen with a tulip in her dress, and soon the trade began in exchange of fantastic sums. For one bulb of Mary Brunet, a miller agreed to part with his mill. This is the name of the bulb, Mary Brunet. A Frenchman was happy receiving his bride's dowry, a single bulb of a rare tulip. Point number 5. Another enthusiast exchanged a flourishing brewery valued 30,000 francs for a bulb named Tulip Brasserie. Point number 6. The craze spread from Flanders. Flanders is a name of a place, to Holland, which was to be the stage for the most astonishing drama in the whole history of horticulture. Astonishing, हैरान कुन हद तक ट्यूलिप जो था वो एडमायर किया गया और बस उसकी प्राइसेस को बढ़ा दिया गया, उसको फैशन सिंबल बना लिया गया हॉलैंड में. Now we are going to see what is there in section number B. So section B, paragraph number 1. Dutch amateurs forced the prices of rare bulbs of tulip up to a ridiculous figure before the height of tulipomania from years 1634 to 1637. Already prices were very high. Amateurs होते हैं शौकीन, जिन लोगों को शौक़ होता है ट्यूलिप्स का और जिन्होंने फैशन को, ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है. Semper Augustus, name of the most higher esteemed red and white tulip flower with blue tinted base, was sold for thousands of florins, wrote Bessennier in 1623. अब ये जो हमारे पास ट्यूलिपोमेनिया है उसकी डेट है 1634 टू 1637 और बेसेनियर ये लिख रहे हैं 1623 में कि सेम्पर अगस्टस जो था वो एक उसका जो बल्ब था, सेम्पर अगस्टस इज़ द नेम ऑफ ट्यूलिप, इज़ अ काइंड ऑफ ट्यूलिप फ्लावर, उसका एक बल्ब जो है वो 2000 फ्लोरेंस में बिकता था. द सेलर वॉज हिमसेल्फ सोल्ड व्हेन ही नोटिस्ड द 2 lumps on that bulb, which would have become 2 offsets costing 2000 florins. अब इस तरह की बहुत सी स्टोरीज़ इस ऐसे में आपको बताई गई हैं. इसमें भी ऐसा है कि एक सेलर ने एक बल्ब को सेल किया 2000 फ्लोरेंस में, और जब उसने सेल कर दिया, वो सोल्ड था वो बल्ब, उसने नोटिस किया कि 2 लम्प्स हैं, इसके साथ में जो लम्प्स कहते हैं बर्ड्स को, जो कि ऑफसेट्स बन जाते, जो 2 प्रॉपर बल्ब्स बनते और वो 2000 फ्लोरेंस को गेन कर सकता था. Paragraph number 2 in section B. Soon everyone was growing bulbs. Speculation along with bulb growing went on, followed not only by mercantile people but also by first noblemen, citizens of every description, mechanics, seamen, farmers, turf diggers, chimney sweeps, footmen, maidservants, the oilcloth women, etc. अब ये जो बल्ब ग्रोइंग था, क्योंकि ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद बिज़नेस था, तो इसकी स्पेकुलेशन कहते हैं फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स स्टार्ट हो गए, और ना सिर्फ बेहतरीन जो तजारती और कारोबारी लोग थे, बल्कि सोसाइटी के every person from every field of society involved in the business of tulip. उनमें कौन कौन लोग थे? फर्स्ट नोबलमैन भी थे, सिटीजन ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, हर तरह के लोग थे, मैकेनिक्स थे और फार्मर्स थे, और टर्फ डिगर्स जो होते हैं खुदाई करने वाले मज़दूर थे, चिमनी में काम करने वाले मज़दूर थे, और दरबान थे, और खानसामा थे, और कपड़े धोने वाले लोग थे. हर तरह के लोगों ने अपने बिज़नेस को साइड पे रख के जो ट्यूलिप ग्रोइंग था उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. At first everyone won and no one lost. Point number 3. Then gamble grew wider. Houses and estates were mortgaged. Workmen sold their tools. अब ये mortgage क्या है? मतलब
गिरवी रखना शुरू कर दिए लोगों ने अपने घरों को, अपनी स्टेट्स को, अपनी प्रॉपर्टी को। और जो लो स्ट्रेटा था सोसाइटी का, उन्होंने अपने औजार जो थे, अपने जो जिन 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 औजारों के ज़रिए से वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे, उन सबको बेचना शुरू कर दिया टू इन्वेस्ट इन ट्यूलिप ग्रोइंग। Number 4, some of the poorest people gained in a few months houses, coaches, and horses, and behaved like the first character in society. First characters mean noblemen. Number 5, one speculator made exact 5,000 pounds in 4 months. इतना प्रॉफिट लोगों ने अर्न किया है कि कुछ लोग जो थे वो दिनों में उमरा की लिस्ट में आना शुरू हो गए सोसाइटी के। पॉइंट नंबर 6, in a single town deals of millions of pounds were made during tulipomania. एक सिंगल टाउन का वो एस्टिमेट लगाता है, ऐसे ही स्टोर कहता है कि मिलियंस, लाखों पाउंड का बिजनेस था वो एक टाउन में हुआ करता था ट्यूलिपोमेनिया के दौरान। Section B, paragraph number 3 outlines speculation was made and note the actual sale. अब ये जो बिज़नेस था, जब इतना ज़्यादा ये हाइट पे गया है तो बहुत सा काम जो था वो पेपर वर्क पे था। द ट्यूलिप फैंसियर वुड मेक engagement with a dealer for a bulb. ये जो ट्यूलिप ब्रीडर्स थे वो डीलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे। If there is rise and fall in the prices of growing bulb, the dealer has to retain bulbs. The familiar gamble of stock exchange. Point number 3, people began buying tulips with leverage using margin derivatives contracts to buy more than they could afford. अब ये जो लेवरेज है और ये जो मार्जिन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सारा कुछ, ये जो लेन देन होता है ये उधार पे होता है कि हमें पैसा मिलेगा तो हम आपको पे कर देंगे। और उन्होंने इतनी इतनी बड़ी डील्स की जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, जस्ट टू अर्न the maximum of the profit. Section B, paragraph number 4 outlines, by the end of 1637, prices began to fall and never looked back. Now, here on this point, the economical bubble burst actually. People purchased bulbs on credit. ये bulbs है। ऑन क्रेडिट लोगों ने उधार पे ख़रीदा हुआ था बल्ब को, जो ट्यूलिप का बल्ब है जिससे ट्यूलिप ग्रो करता है, होपिंग टू रीपे देयर लोन्स व्हेन दे सोल्ड देयर बल्ब्स फॉर अ प्रॉफिट। जब हमें मुनाफा मिलेगा तो हम जो है वो आपका लोन दे देंगे। इस चीज़ पे सारा बिजनेस हो रहा था। बट वंस प्राइसेस स्टार्टेड टू देयर डिक्लाइन, होल्डर्स वर फोर्स्ड टू लिक्विडेट एंड सोल्ड देयर बल्ब्स एट एनी रेट। अभी जो डीलर्स हैं उन लोगों ने मॉक ऑक्शन की, अपने स्टेटस को रिटेन करने के लिए मॉक ऑक्शंस होता है, उन्होंने झूठी सी वो बोलियां लगाई और उस फैशन को, उस ट्रेंड को, उस ट्यूलिपोमेनिया को मेंटेन रखने की कोशिश की। लेकिन फाइनली उनको अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे लिक्विडेट, उनको ख़त्म करना पड़ा और ट्यूलिप को किसी भी रेट में बेचना पड़ा। आफ्टर द collapse of prices, the buyers refused to pay for the tulip bulbs according to the forward contracts. Point number 4, the Court of Holland decided to suspend all contracts. Markets was shut by the local Dutch government. अब ये इतना ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम था, प्रेशर था कि जो अथॉरिटीज़ थी उनको इस प्रॉब्लम को देखना पड़ा और उन्होंने हर तरह की मार्केट एक्टिविटी पे, ट्यूलिप की मार्केट एक्टिविटी पे को बैन कर दिया। मैनी सेलर्स प्रेफर टू कट देयर लॉसेस अपने नुकसान को पूरा करने के लिए, एंड टू एक्सेप्ट इन रेडी मनी 5 और 10% ऑफ द अमाउंट ओइंग टू देम। लोगों ने 5 या 10% जो था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया अपने लॉस को कम करने के लिए। सेक्शन बी, पैराग्राफ नंबर 5, here we are going to see a story.
related to tulipomania. A syndicate of Harlem. Harlem is a place, और syndicate means group. एक जो group था florist, people growing flowers. On hearing of the growth of a black tulip at the hug by a cobbler, bought it for 1,500 florins. No sooner was it in their possession, they threw it on the ground and trampled it underfoot. उन्होंने उन फ्लोरिस्ट ने क्या किया, एक कॉबलर से 1,500 फ्लोरेंस में एक जो ट्यूलिप था, ब्लैक ट्यूलिप, लेके उसको फ़ौरन से अपने पाँव के नीचे मसल दिया. दे एक्चुअली हैड ग्रोन अ ब्लैक ट्यूलिप टू. उन लोगों ने भी एक ब्लैक ट्यूलिप जो था वो उसको ग्रो किया हुआ था. नाउ देयर वॉज नो मार्केट कंपेटिटर अगेंस्ट दैम. उन्होंने उस कॉबलर से 1,500 फ्लोरेंस में वो लिया और उसको ख़त्म कर दिया. They would have given him 10,000 florins if he had asked them. अब वो जो गरीब कॉबलर था उसको नहीं पता था कि अगर वो इनसे 10,000 फ्लोरेंस मांगता तो वो भी देते, अपनी ज़रूरत के लिए देते, कि उनके पास कोई मार्केट कंपेटिटर ना रहे. The wrecked cobbler took this loss to his heart and promptly expired. और वो जो कॉबलर था वो उसने इतना सदमा लिया इस बात का और वो थोड़ी देर के लिए बेड पे रहा और प्रॉम्प्टली बहुत जल्दी ही उसकी डेथ हो गई. सो गर्ल्स, you have to solve all the question answers given in your exercise according to all these outlines I have explained, and you have to prepare the synonyms of difficult words in the text for your exams. This is all. Thank you.